everybody, so it's my night routine. In the first step, I just remove my makeup with micellar water. I have to got my cotton pad and I have to apply some of it on my skin और इससे मेरा स्किन जो है बहुत अच्छे से इस तरह से आपने कर देना है क्लीन क्लींजर से पहले। और जो भी एक्स्ट्रा पोल्यूशन है जो भी ये यू कैन सी बहुत ज़्यादा polluted. And the next step I have to cleanse my skin. So for that I take my cleanser Neutrogena का it's work great on dry skin and इस तरह से मैं अपने चेहरे को क्लींस कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो पहले स्टेप से और इस नेक्स्ट स्टेप से मेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मूथ और क्लीन हो जाता है फॉर अप्लाइंग नेक्स्ट स्टफ। सो इन द थर्ड स्टेप इट्स माय रूटीन नाइट सॉरी इट्स माय रेटिनॉल नाइट। तो मैं रेटिनॉल यूज़ करूँगी और मैं वीक में 3 because it's only 0.1 और 0.2 squash तो ये अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। इन द थर्ड स्टेप आई हैव टू मसाज माय स्किन विद द आलमंड स्वीट आलमंड ऑयल में लगा लेती हूँ और इस तरह जेट रोलर से मैं अपनी स्किन को अच्छी तरह से एंड सीरियसली इट वर्क ऑन माय स्किन। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा स्किन है फेस है वो glowing like a glass skin। And the fifth step I have to massage my face with my fingers और मैं ऑयल लगा लेती हूँ कोई सा भी आलमंड ऑयल हो या तो इस तरह से मैं मसाज कर लेती हूँ आलमंड ऑयल से या जॉनसन्स का बेबी ऑयल दोनों मेरे फेस पे अच्छा है लेकिन ये इससे मेरा थोड़ा फेस ड्राई हो जाता है तो ड्राई वालों के लिए स्वीट आलमंड ऑयल फिर ज़्यादा अच्छा है। पेट्रोलियम जेल आई कांट लिव विदाउट बीइंग अ ड्राई स्किन सो मैं यूज़ करूँगी पेट्रोलियम जेल से मैं अपने लिप्स को नोज़ के साइड ताकि कोई भी ड्राइनेस हो जहाँ जहाँ मेरा फेस ज़्यादा ड्राई है वहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ और हैंड्स एंड फीट्स पे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड द सेवन स्टेप लेट्स ग्रो माई आईब्रोज विद द कैस्टर ऑयल। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी जा रहा है कि आप कैस्टर ऑयल को कम से कम 14 डेज़ लगाए तो इससे आपके आईब्रोज बहुत ग्रो करने लग जाते हैं। तो यस इट्स इफ़ेक्टिव कैस्टर ऑयल इज़ सच अ गुड ऑयल फॉर फेस इन ऑल माई बॉडी हेयर एंड या थैंक यू अल्लाह हाफिज़।